A is a collection of the element. It is 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 and 6 by 7. And now here we have to write the set in the set builder form. अगर set builder form में लिखते हैं तो it is a collection of the element. तो generalize करते वक्त here we write the x such that x is equals to n divided by n plus 1. Here n is belonging to set of natural number and n is less than equals to 6. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इन केस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कंडीशन ही नहीं बताई, इसको हटा दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि सपोज 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 6, इज इट ओके? मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने का सिर्फ सेट के एलिमेंट रहेगा, सिर्फ यही एलिमेंट सेटिस्फाइड करेंगे दिस कंडीशन, और इट इज पॉसिबल दैट आल्सो बिलोंगिंग टू दिस सेट? यस। सिर्फ ये एक कंडीशन कैंसल आउट करने से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब मैंने रिराइट किया सेट को, सपोज गलती से ऐसे ना लिखते हुए here suppose we write a is equals to set of x such that x equals to n divided by n plus 1 where 1 less than equals to n less than equals to 6. Is it sufficient to represent the set in the form of set builder form? So क्या कंडीशन, अगर ये नहीं लिखा नेचुरल नंबर तो क्या कंडीशन हो जाएगा इसमें? कौन से एलिमेंट ऐसे एक्स्ट्रा के आ जाएंगे? रेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर सब उसके अंदर आ जाएंगे। करेक्ट है, बिकॉज 1 to 6 में ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंटीजर बिलोंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ इंटीजर रहते थे तो कोई बात नहीं कि यहाँ पे हो जाता था फुलफिल, बट इन बिटवीन 1 to 2 देर आर इनफाइनाइट नंबर। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर। अब ये इनफाइनाइट नंबर में से 0.5 सॉरी 1.5 2.5 1.6 ये सभी एलिमेंट्स भी क्या हो गए इसमें बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले क्या हो जाएंगे? आउटसाइडर एलिमेंट। जो हम आउटसाइडर की बात करते हैं ना, सेट के अंदर बिलोंग न करने वाले अदर एलिमेंट भी क्या करेंगे? इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, और वो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो इस सेट में बिलोंग करेगा, बट एक्चुअली दिस एलिमेंट्स आर नॉट बिलोंगिंग टू द सेट। सो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, curly bracket में we have to write the condition which satisfied by only by the elements of the set, not outsider। ठीक है, इसलिए वो आउटसाइडर के ऊपर ये किया कि आउटसाइडर के एलिमेंट ने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन के टाइप्स किस तरह से कौन से टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं? समटाइम्स दे आस्क give the example, that is write the this condition is in the form of roster form of set. For example, suppose here suppose we take example, ये कल का हुआ है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। The set of all letters in the word mathematics. Describe the set, describe set in roster form. So how to write this term in the roster form of set? Yes, टाइम पे ज्वाइन किया करो जो लोग लेट आ रहे हैं। Question is, describe the set in a roster form. Condition of set is the set of letters in the word mathematics. क्या करना है इसमें? मैम आपका कैमरा ऑफ है। Now it is okay. क्या करोगे? We will write them in the curly brackets along each letter of word mathematics separated by commas and no letter should be repeated. Yes, very good. ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कल के डेफिनेशन में वेल डिफाइंड बोल के ये बता दिया था कि देयर इज अ नो एम्बिग्यूटी ऑफ एलिमेंट विच बिलोंगिंग टू सेट और नॉट। ओके, उसके साथ में ये भी कंडीशन एक सबसे इम्पोर्टेंट है।
सपोज यहाँ पे क्या था, वी हैव टू राइट द सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे सेट का कंडीशन क्या है, सेट कंटेन द लेटर्स, कौन से लेटर्स, दोज आर कंटेन इन ए वर्ड मैथमेटिक्स। अब मुझे अगर सेट बनाना है तो वी नो दैट सेट वी राइट इन द कैपिटल ए इज इक्वल्स टू curly bracket में लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय द कॉमा। सो लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय द कॉमा में क्या होगा, एम ए टी एच एम। क्या मैं यहाँ पे ए टी आई सी एस ये लिखना गलत है, वाई, बिकॉज सेट में अगर आपने कह दिया कि दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू सेट, सो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं कि ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट में। once we say that this a is belonging to the set, so no need to write again a. Similarly अगर हमने m के बारे में बता दिया, once we say that m is belonging to the set a, so फिर से एक बार उस सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या है, आप फिर से बता रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू द सेट, सो नो नीड टू राइट द रिपीटेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग। सो इफ वी वांट टू राइट मैथमेटिक्स वर्ड के करस्पॉन्डिंग जो सेट बनेगा, इट इज ए एम देन ए टी एच और एम अगेन है, सो sorry here e, then again m is repeated, a is repeated, skip this element, t is again repeated, again skip I, then c, and next is s. So these are the letters which belonging to the set. So ये हो जाएगा परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, किसी को कुछ मैम पूछना? इन्हें ऑर्डर में लिखेंगे तो चलेगा? यस, यहाँ पे ना सेट में कोई एलिमेंट आप फर्स्ट लिखते हो या फिर नेक्स्ट में लिखते हो तो कोई उसका मतलब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे अगर आपको सेट में 1 to 5 एलिमेंट लिखना है, इफ यू राइट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, सो ये इमीडिएटली मुझे समझ में आएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। सपोज इफ वी राइट द सेट ए इज इक्वल्स टू 2 3 5 4 1, सो ये और ये दोनों सेट कोई डिफरेंट नहीं है, दिस बोथ द सेट्स आर इक्वल। Why equal? Because the element which belonging to set A, the same element belonging to set B, and the element which belonging to set B, that same element belongs to set A. So these are the equal set. सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से इसलिए लिखते हैं बिकॉज ऑफ फॉर स्टडी। अगर मुझे इस सेट को देखना है तो मुझे 2 के बाद में क्या आएगा नहीं समझ में आ रहा है, 3 है, बीच में ही 5 आ रहा है, बीच में ही 4 आ रहा है। सो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। अब यहाँ में मैथमेटिक्स में मैंने ए फिर ई ऐसे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मैथमेटिक्स वर्ड में से कलेक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट मैथ्स में एम आ रहा था, दैट्स व्हाई वी राइट एम, फिर ए, फिर टी, फिर एच, और फिर ई रिपीट, एम रिपीट हो रहा है, इसको स्किप कर दिया। सो मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में ये इस तरह से, अगर अल्फाबेट के हिसाब से जाते थे हम तो देन वी राइट ए फर्स्ट देन सी देन ई, ठीक है। सो इससे फर्क नहीं पड़ता है, जब आपको जो इजी रहेगा और जो समझने के लिए इजी है उस मेथड से हम लिखते हैं, अदरवाइज ये दोनों भी सेट कैसे इक्वल है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज, अब रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म का तो समझ में आ गया। अगेन सपोज वी टेक द एग्जांपल, राइट द tabular form of a set. Set is, condition of set is, write the tabular form of a set. The condition, the set of squares of integers. क्या आएगा सेट में, बताओ? How to write tabular form? The set of squares of integer. Within curly brackets, 0, comma 1,
sorry, 0, 1, 4, 9, 16, 25, dot dot dot. Yes, correct है. So here स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, सो इंटीजर्स का स्क्वायर अगर करोगे तो इंटीजर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव रह सकते हैं. सो फर्स्ट इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, +1 -1 square is 1, +2 -2 square is 4. Then next will be 25, 9, 25, 30, sorry, equals to 0, 1, 4, 9, 16, 25 and so on. So if एलिमेंट्स, जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके नहीं लिखा कि यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट आ सकता है, नहीं, दिस आर द फाइनाइट एलिमेंट्स. तो फाइनाइट के लिए अगर यहाँ पे 50 एलिमेंट्स है, 25 एलिमेंट्स है, तो दिस आर द फाइनाइट एलिमेंट्स. सो फाइनाइट का कंप्लीट सेट यहाँ पे लिखना मस्ट है. बट इन दिस केस देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सो इनफाइनाइट तक के तो सेट लिखना पॉसिबल नहीं है. सो दैट टाइम वी राइट डैश करके आप एंड सो ऑन लिख सकते हो. So this type of set is called set in contain infinite elements. ठीक है, and this is a finite set. ठीक है, so दोनों में difference क्या है? If number of elements are finite, मतलब countable है, finite मतलब कैसे रहेगा? 100,000 भी रहा तो भी that is called the finite. कि last कहाँ पे जाके हम रुकने वाले हैं, ये अगर हमें known है, so then that called the finite set. तो ये जो set था, this is a finite set. And here this set contain infinite elements, so it is an infinite set. Then now next is second type से एक क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, ये हो गया write the set in the tabular form or we can say in the roster form. Second, suppose we have to describe the set in set builder form. Describe the set in set builder form. Now example is the set of letters, the set of all letters in the word probability. So how to write set in set builder form? Yes. अब इंग्लिश अल्फाबेट में से कोई भी लेटर उस कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करे, जस्ट यही लेटर्स जो है वही कंडीशन सेटिस्फाइड करे. Can I tell? Yes. In bracket, x is such that x is a letter of word probability. यस, वेरी गुड. सिंपल है ना. यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेटर लेना है. कौन सा लेटर लेना है? लेटर विच बिलोंगिंग टू वर्ड प्रोबेबिलिटी. सो सेम यही एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे इन कर्ली ब्रैकेट. सो सेट बिल्डर फॉर्म सबसे इजी है. ये आपको लगेगा कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी है क्योंकि आपको ये विजुअलाइज करना, समझना ये इजी लगता है. बट एज कंपेयर टू दिस सेट बिल्डर फॉर्म सबसे इजी, क्योंकि वर्डिंग में क्या करना है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है. जस्ट इसी को लेके यहाँ पे करली ब्रैकेट में पुट अप करो. इन जनरल केस में यहाँ पे एलिमेंट्स, सो एलिमेंट्स को दिखाने के लिए वी टेक द एक्स. एक्स इज ए एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट है? एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड probability. So here in curly bracket x such that x is a letter in the word probability.
Ma'am, Yes. ma'am, but there can be different answers for this, no, ma'am, for the same question. Uh, Tell me the another way to write the set. No, ma'am. I mean, for any other, for example, including numbers, for the sets of numbers, we can put different set builders, no, ma'am. Yes, here you may write wording में आप किस तरह से लिखते हो, जस्ट ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि आउटसाइडर एलिमेंट डज नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन. हमारा मोटिव सिर्फ इतना रहेगा कि आउटसाइडर, कोई भी आउटसाइडर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करे. फिर आप कैसे भी वर्डिंग को घुमा, मे बी यहाँ पे क्या लिख सकता है, सम मे बी राइट हियर एक्स सच दैट एक्स इज ए इंग्लिश लेटर, एक्स रिप्रेजेंट इंग्लिश लेटर विच is belonging to the word probability. ऐसे भी लिख सकते हो. So English letter obviously P R ये क्या है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये probability इस वर्ड को बिलोंग करते हैं. Yes, ma'am. Especially for number in those number sets, also there can be many different Yes. set builders, right? Okay, ma'am. Only condition is outsider does not satisfy the same condition. Just इस कंडीशन को फुलफिल करो, बाकी फिर आप लोग किस तरह से लिखते हो वो आपके ऊपर रहेगा. The same way, suppose here same इससे देखते हैं कि how to write the different way of set in set builder form. The second example is, suppose the set of all even natural numbers. So tell me the how to write the set in set builder form. इस second question के लिए. Within curly brackets, x colon x is equal to 2n, Yes. and x is belonging to the group of natural numbers, that is bold n. Now here natural numbers are start from 1. Okay. So 1, 2, 3, 4. So here any number if we multiply by 2, so again we get the even number, any number. So n is a any natural number, any integer if we consider, and if we multiply that number by 2, so always we get the even number. So obviously this condition satisfied only even number. Okay. अगर इसी टर्म को मैंने किसी अदर फॉर्म में लिखा, सपोज फॉर एग्जांपल natural number instead of natural number we consider X is a multiple of 2 and x is a member of natural numbers. या बट ये जो वे रहेगा ना ये लिखने का, ये मतलब हमें क्या करना है मैथ्स में, देखने के बाद में किसी को वर्ड से ज्यादा सिंबॉलिक किस में ज्यादा क्लियरली समझ में आता है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो ये प्रॉपर वे रहेगा कि इसको एक्सप्रेस करो, इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इमीडिएटली उससे क्लियर आइडिया आ जाए. यस. Okay, ma'am. मैम वहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए ना? Yes, yes. Sorry. N belongs to natural. Instead of representing in this way, you may write here directly set A contain twice n such that n belonging to set of natural number. Or here instead of this term, we write A equals to twice n such that n is a natural number. Okay. So यहाँ पे x की value twice n है. So instead of that, you may write directly it is a twice n. Yes, ma'am. Now type of third question is, फर्स्ट हमने देखा है रोस्टर फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट इज suppose we are given the set is already in the roster form, or you have to write in the set builder form, or sometimes we are given the set in a set builder form and we have to rewrite this set in the roster form. So दोनों में से एक फॉर्म दिया हुआ रहेगा और आपको अनदर फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है. फॉर एग्जाम्पल
Suppose we have given set A is collection of element x such that x belonging to integer and mod of x is less than equals to 2. So it is nothing but the set builder form, and we have to write this set builder form, convert this set builder form into roster form. So what is the representation of same set in roster form? Ma'am, Yes. A is equals to in curly bracket -2, comma -1, comma 0, comma 1, comma 2. -2, comma -1, 0, 1, 2. Now check whether this element satisfied the both the condition, because once we say and, that means both the condition satisfied ना, ये must है, ना कि किसी एक condition को fulfill करे. अगर और है ना, ये भी याद रखना, and मतलब both condition compulsory है, और मतलब either first condition और second condition दोनों में से एक भी हो जाए तो भी okay. So here and means both the conditions satisfied by this element. So here -2, is it a integer? Yes. Is it mod of -2 is less than equals to 2? Yes. Because if we take mod of -2, so mod is nothing but the positive element. So -2 का mod is again 2 हो जाएगा, or which is equals to 2. So this element satisfied the same condition, both conditions. Similarly, if we take -1, so -1 is an integer and mod of -1 is 1, and which is less than equals to 2. So this is the correct representation of set in a roster. Clear है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? Yes. Let's see. The next example. Suppose we have to write the set. Your question is, write the set A is equals to x such that x belonging to integer and x square is less than 20 in the roster form. Can I, ma'am? Okay. In brackets, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Yes. 5 square is 25, but 4 square is 16. That means 4 say less those integer numbers satisfying this condition. So here plus minus में सभी elements are. Okay. So now next is, I think all the types is done. Okay. Now we see the types of sets. आप लोगों को कौन से type known है? हमने First is क्लोज्ड सेट वैसे no. Types of set, that is a suppose empty set. Empty set कैसे रहेगा? फाइव Phi is an empty set. मतलब उसमें ऐसे नहीं कहोगे कि मुझे कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हुए देखे, सपोज आपको empty set रिप्रेजेंट करना है तो they write this way. So this is a wrong, because 0 is a element. मैथ्स में 0 भी एक नंबर है जो इसमें बिलोंग कर रहा है. So empty set दिखाने का ये कोई तरीका नहीं. So suppose you have to write the empty set, so just write a phi. So notation of empty set is phi, or the simply curly brackets. Okay, so this is the notation of empty set. और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सपोज मुझे अगर डिफाइन करना है कि व्हाट इज द एम्प्टी सेट, द सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट, और इट इज आल्सो कॉल्ड द नल सेट और void set if there if it has no element and it is denoted by phi. Here this empty set is called
a set is said to be empty, or empty set को we can call it is a null set, or void set if it has no element. If it has no element. And notation of empty set is either you have to write phi or simply curly bracket. कर्ली ब्रैकेट के अंदर phi लिखना ये भी गलत है, मतलब ये इस तरह से अगर लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट कंटेन phi, इसका मतलब है set contain empty set. Okay, so don't write here curly bracket contain phi. Just write simply phi or simply divide. So ये भी एक गलत नोटेशन है, ये भी गलत है. Now, suppose here I write the set, for example, set contain x, which is a real number, and its square is -2. So, how many elements are belonging to this set? कौन से element आएंगे if we write this set in the roster form? There will be no such element. Zero. No such element, because we know that square of positive or negative number is always positive. So square of any number is always a positive number if the number is real. This condition is also important. Real, why real, abhi just मैं explain करती हूँ. So it is a empty set, or we can write it as a phi. Okay. If we are not writing this x belongs to real number set, और जस्ट हम इसी कंडीशन को कंसिडर करेंगे, तो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट जिनका स्क्वायर निगेटिव हो सकता है. कौन से नंबर आएंगे बता सकते हो आप लोग? ऐसे कौन से नंबर है कि जिनका स्क्वायर निगेटिव आ सकता है? हमने तो अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर. वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स नंबर. बिकॉज ये अगर मैंने कह दिया कि नंबर x is a number where x square is equals to -1. So this set contain I. I is a imaginary number, complex number, और I square is -1. So complex के अंदर possible है किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है. So complex के अंदर possible है, that's why यहाँ पे x belonging to real number ये लिखना must है. So here x is a real number, और real number के अंदर किसी भी स्क्वायर का किसी भी नंबर का स्क्वायर नेवर निगेटिव होता है. सो यहाँ पे देयर नो सच एलिमेंट इज एक्सिस्ट. द नेक्स्ट टाइप इज हाँ यस मैम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 को भी तो हम 2i के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? यस, तो यहाँ पे इसलिए तो रियल का है ना. ये कौन सा एलिमेंट हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर. सो रियल में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता नहीं. ओके मैम. ना ठीक है, कोई नेक्स्ट एग्जांपल की जरूरत है कि नेक्स्ट टाइप पे जाऊं? नेक्स्ट टाइप. ना सी है. द नेक्स्ट टाइप इज सिंगलटन सेट. व्हाट इज सिंगलटन सेट? वर्ड से ही समझ में आ जाएगा. व्हाट इज सिंगलटन? There's only Only with single single element. element. Very good. There is only contain single element, that is called a singleton set. Here the set contain हाँ, मुझे ये भी बताना था कि अगर कोई क्लास में राइटिंग वर्क कर रहा है कि मैं बता रही हूँ तो साइमल्टेनियसली मैम बता रहे हैं, तो चलो अभी फटाफट नोट करते हैं. कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, और अगर नहीं प्रोवाइड हुआ तो भी बुक्स में ये सब अवेलेबल है. सो जस्ट फोकस कि क्या समझा रही हूँ और उससे समझने की कोशिश करो. हमें क्लास में पढ़ना है. नोट्स बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल है, बुक्स भी है रीड करने के लिए, और मैं नोट्स भी सेंड करते जाऊंगी, वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी. तो सिर्फ समझने की कोशिश करो. थ्रू आउट द क्लास सिर्फ आपका ये रहेगा कि सुनना है और समझना है. कुछ क्वेश्चन होगा तो वो पूछना. राइटिंग वर्क करने के चक्कर में क्या हो जाएगा ना, तो मैं जितने स्पीड में पढ़ाती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि साथ में अगर करोगे
तो एक तो राइटिंग कंप्लीट होगा या फिर समझना कंप्लीट होगा। सो बेटर वे समझना इम्पोर्टेंट है, राइटिंग हम बाद में कभी भी कंप्लीट कर सकते। आप लोग राइटिंग लेक्चर के बाद में, लेक्चर जब हो जाएगा ना, तो शांति से टेक्स्ट बुक्स में से प्रॉपरली टाइप्स, फिर एक एक टाइप लिख के फिर उसका एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना, वो बाद में करना, ठीक है। Here the singleton set definition is a set consisting of a single element is called a singleton set, or we can say the set contain only single element is called a singleton set. For example, just अभी हमने जो दो example दिखे थे ना, it is again a singleton set. This set contains single element 0, और this इस set के बारे में क्या कहोगे? Phi contain इसका मतलब है the set contain empty set. Okay, this is again an example of singleton set. Or here you may write the set A contain X such that X is a natural number and 5 less than X less than 6. So the set A contain only 6. Now next type is finite set. Just अभी हमने finite set का discussion किया था. What is finite set? Sets which contain finite number of elements. Set is called a finite set if it contains finite number of elements. इसी को अगर प्रॉपर डेफिनेशन से लिखते हैं, सो हियर। अच्छा मुझे बताओ, ये सिंगलटन सेट या फिर एम्प्टी सेट इज अगेन अ फाइनाइट सेट? ये दो जो टाइप देखे हमने, Yes, one ma'am. second. Yes. Empty set, how many elements contain in empty set? 0. 0. So how many बोल रहे, तो then we can say it is a 0 element. So empty set contains 0 element and singleton set contain 1 element. मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी फाइनाइट सेट को अगर बताना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पे क्या होगी, फाइनाइट। तो n इज ए नेचुरल नंबर, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए सेट। सो इट इज ए फाइनाइट, सो इट इज ए फाइनाइट सेट। The definition is a set is called a finite set if it is either null set, that is a empty set, either वो null set हो जाएगा empty completely, or its element can be listed by natural number. There is a 1, 2, 3 and so on. And the process of listing terminates at a certain natural number. अब देखो, सिंपली ये कहना कि फाइनाइट सेट, द सेट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट का ही मीनिंग पता नहीं है और फाइनाइट की डेफिनेशन ही फाइनाइट के वर्ड के फॉर्म में लिख रहे। सो ये थोड़ा सा अलग होता है। मतलब आपको कहा है कि किसी, ये एक समटाइम्स आप लोग किसी के साथ में बात करते हो, कुछ पूछते हो, सिंपली एग्जाम्पल इज, सपोज आपको कहा है कि व्हाट इज, सिंपल एग्जाम्पल अगर लेते हैं, व्हाट इज बुक, तो आप क्या कहोगे, बुक इज अ बुक। तो ये क्या हो जाएगा, किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है और आप उसकी डेफिनेशन उसी वर्ड के साथ में बताना। फिलहाल मुझे फाइनाइट, आपको मुझे सबको पता है कि व्हाट इज द फाइनाइट,
बट डिफाइन करते वक्त अगर मैं फाइनाइट को फाइनाइट से ही डिफाइन करूंगी तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब उसमें क्या हो जाएगा कि जो अननोन है अननोन को ही अननोन के फॉर्म में बताना। सो उसी को अवॉइड करने के लिए इन्होंने डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लिखा है कि सपोज वी आर सेइंग फाइनाइट सेट, सो ये डिफाइन नहीं करेंगे कि सेट विच कंटेन द फाइनाइट एलिमेंट, वी डोंट नो व्हाट इज फाइनाइट। सो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, a set is called a finite set if it is either null set, that means empty set is called a finite set, or its element can be listed by the natural number. So what is the listed by the natural number? ये भी मैं just बताती हूँ. It is listed by the natural number 1, 2, 3 and so on, and the process of listing terminates, मतलब हम कहीं पे तो जाके stop होने वाले, terminate at a certain natural number n. So what is the meaning of listed? Suppose last lecture का example, that is a collection of English alphabets, the elements vowels. ठीक है, स्पेशली अगर vowels का सेट लेते हैं, set A contains the vowels, so here A, E, I, O, U. Now see here, we can listed this element by the natural number. मतलब ये जब आप काउंट करोगे कितने एलिमेंट्स इसमें है, तो इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। मतलब इनको क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स को असाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में, तो नेचुरल नंबर का फर्स्ट एलिमेंट उसको डिनोट करेगा 1, फिर सेकेंड एलिमेंट 2, 3, 4, 5। सो सेट के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, सर्टेन नेचुरल नंबर से असाइन कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इसमें इतने ही एलिमेंट्स हैं। और हमारी ये जो प्रोसेस है, एक कहीं तो भी जाके क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। कहाँ पे स्टॉप होगी, तो ये 5 पे स्टॉप होगी। सो दिस इज अ सेट इज कंटेन 5 एलिमेंट्स, तो हम प्रॉपरली यहाँ पे बता सकते हैं। सो इट इज ए फाइनाइट सेट, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन को इस तरह से लिखा है मैंने। So listed by the natural number. Listed by the natural number मतलब each element of the set we can assign by the natural number. And this process if terminates, then it is called a finite set. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Similarly, if the set is not finite, then it is called the infinite set. अब चल सकता है क्योंकि finite हमें पता है अभी क्या है. So if we are saying infinite set, the set which is not a finite, then that is called the infinite set. Next is infinite set. So here we can say the set which is not finite, then it is called the infinite set. Thank you. Like, share and subscribe.